What's on Your Mind is not your fictional or conventional book. It is not even a biography. What it is a collection of thoughts that emerged in the mind of an inspiring individual through several decades that found its way into various magazines, newspapers, dailies, and of late social media through the means of articles, editorials, publishing, and opinion. The journey of this book, What's on Your Mind, started when Abbu turned 50 years old. तो अब मुझे याद है आज भी एक किताब हुआ करती थी द बट, जो अब्बू ने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी थी बैक इन द 70s और 80s एंड प्रिंट किए थे. तो हमारे पास बस की एक ही कॉपी बाकी रह गई थी एंड बस बहुत कस्ता हालत में थी. इट वाज नॉट वेरी बैडली प्रिंटेड, मतलब पुरानी हो गई थी किताब. तो हमारे छोटे बहन है डॉक्टर तमन्ना काविश जबीन, व्हेन ही टर्न्ड 50 शी गॉट दैट बुक रीरिटन, रीडिजाइंड एंड reprinted as a gift to her father, and of course that made Abbu very happy because it was a great gesture. A few years later, my elder brother Mohammed Babar Zaman came across this old dusty folder, एक बहुत ही पुराना फोल्डर था जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की कटिंग्स रखे हुए थे. ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन भैया फाउंड आउट कि वो जितने भी आर्टिकल्स है पूरे एक्चुअली अब्बू के आर्टिकल्स है, डेटिंग बैक टू फ्रॉम द 70s, 80s, 90s इन वेरियस न्यूज़पेपर्स, डेक्कन क्रॉनिकल, सऊदी गैजेट, अरब न्यूज़. तो ये पूरे आर्टिकल्स उनको फोल्डर में मिले. दैट टाइम एंड द आर्टिकल्स वर वास्ट. इट कवर्ड फ्रॉम politics to technology to human rights to modern thinking, reformation. And Bhaiya thought, why not collate all these articles together, which has been published by Dr. Haseebullah, on these articles plus whatever he publishes on social media, and make it into one book. And therein began a long journey of collating, typing, and collating all of Dr. Hasiebullah's words into one big fat word document. तो so far so good. तो भैया क्या करे, हमारे पूरा हर चीज ऐसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ला लिए. बट देन ही डिड नॉट नो what to do next, because वहाँ पर then the big work of proofing and structuring and designing that entire book was a little bit overwhelming for him, and he almost decided to drop the plan when our youngest brother Nadir Rehan, with the help of his equally creative wife Samara Khan, they put in 6 months of rigorous designing, editing, proofing, relaying, reviewing, redoing, and completing the book as we will inshallah see it today. So I think if there is someone who should lead with today's program, it should be Rehan himself. So I request all of you to please welcome him with a round of applause to come and say a few words. तो मुझे याद है जब मैं 14-15 साल का था, मुझसे अक्सर जब लोग पूछते थे कि मेरा ज़िंदगी में एम्बिशन क्या है, तो मैं अब्बू का एक कार्ड था, विजिटिंग कार्ड, मैं उसको दिखा के बोलता था ये मेरे को इसको बीट करना है. वो कार्ड जो एक 2 फोल्ड था वो ऑलरेडी काफ़ी आइकॉनिक था, जस्ट लाइक दिस बुक. और उसमें मतलब अब्बू के कुछ 6-7 डिग्रीज, एक 12-15 अचीवमेंट्स जो अब्बू ने काफ़ी यंग एज से हासिल कर रखे थे वो था. तो मैं सबको अक्सर काफ़ी प्राउडली दिखा के बताता था कि मुझे ये मेरा एम्बिशन. और अपने अंदर ही मैं अक्सर सोचता था कि हाउ इज़ इट दैट समबडी is able to achieve so much, in such a short period of time. मतलब एक एग्जांपल जो इस किताब में है इज एक आर्टिकल जो अब्बू ने 1983 में लिखा था, जिसका टाइटल है हाउ कंप्यूटर्स आर टर्निंग मेन इनटू ऑर्डरली पपेट्स. कि 1983 में, अब से 30 साल पहले, अब्बू में इतनी दूरंदेशी थी कि उन्होंने सोचा और इस बारे में लिखा कि 25-30 साल में पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी. 40 years, there you go, somebody corrected me. To wrap up, I would like to give my love to Abbu. Abbu said, you have led a remarkable life, and this book hopes to shine a light on some of the things that you have done. You have always tried bringing joy, hope, and positivity to everyone around you, and I hope this small gesture from your 4 kids does the same for you. This book titled What's on Your Mind. Briefly, I gone through the book. It's a very tremendous book, knowledgeable book, and I know Dr. Haseebullah last several years. I know him, how he struggled from one profession to another profession. Not only in India, he is a person of international knowledge. He can talk, he can write, he can speak, and he can motivate people. This is his excellent, knowledgeable ideas. So he has a very good sense of humor. He knows what he is talking, and he is a journalist, and he is a columnist, and he is teaching, he is giving technical know-how to a lot of corporates. And I am very, very surprised to see in today's world, in 21st century, how the 4 kids, collected the whole 30 years data and compiled a book. It means not only he is in the market to teach different corporates, management level, he and his wife brought up their children in such a way. The children are well under control, well educated, well mannered, and they work for his father. This is a great idea. So I am very surprised, and I want to congratulate Dr. Haseeb's family and kids. They have done very well, and he is a person of a role model for the society. The whole family is a role model for the society. His total experience is about 50 years experience in the international market, and he has done a tremendous job. He wrote so many articles, I know, in Saudi Arabia, in Saudi Gazette, Arab News, in Hyderabad, Deccan
chronicle, so a lot of articles in a different subject. He always tried to push the society to come up with a plan and do something better for the society, for the country, for the people. Somebody who starts off as a tourist guide in one of the most fascinating places in the world, gets on to start a school at 18, 20-year-old, becomes a very good, very acknowledged speaker, goes and works in heavy manufacturing, comes back and sends up a college. And you know, वो इस level पे थे, मैं तकरीबन वही काम इस level पे कर रहा था. I didn't start off as a tourist guide, but the rest of the thing was what I did. Manufacturing, एक college, एक university. And so as I read about Haseeb bhai and read the various things that he wrote about, I really, it was really like reliving my own life, and therefore I felt so nice to have somebody who I could so easily relate to without ever having met him. 2 मिनट पहले मुलाकात हुई मेरी, तो इसीलिए बहुत शुक्रिया. And what a wonderful thing you've done, you children, because वो सबसे अहम काम जो हो सकता है वो ये है कि आप एक किताब की शक्ल में कुछ लिख दें. अगर आप ये किताब पढ़ें, and I will encourage you to read it. It's a very easy read, but it is really so contemporary. It covers just about every issue that you want to read about. It has chapters on just about everything, written in a very lucid fashion. और एक ऐसी सवाने हयात जो you will all feel comfortable reading and feel and like to identify with. न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह, अगर नहीं मेरे अशार में मानी न सही. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डॉक्टर हसीबुल्लाह साहब और उनके होनहार लड़के और मोहतरम गुलाम इज़ानी साहब, सीनियर एडवोकेट, मेरे हमनाम ज़ियाउद्दीन साहब. मैं देखता था कि ये मेरे घर के सामने, मैं जब दरवाज़ा खोलता तो हसीबुल्लाह नजर आते, और मेरे घर के बाजू रहते डॉक्टर औसाफ अहमद नजर आते. तो देखता कि भी आगे अगले भी पिछले भी दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कुछ नहीं. शुक्रिया. मैं आपको एक फिर मुबारकबाद देता हूँ. It's my honor to felicitate Dr. Haseebullah Sahab on his achievements. Produce a book, very knowledgeable and learnable book. This is a compilation of all the old published articles in different media, different papers, different times. It is a good informative and knowledgeable to inspire from this book. So I wish him a lot of best wishes for have the good, healthy, successful life, to achieve more and more, to serve the community and for the betterment of the community. His dedication is highly appreciated in this game. Thank you very much. It was 2015. I was completed my 12th grade, and it was literally a bad time for me. And I was a college dropout, and I was literally broke in my life. And it was 2016. Again, I saw Dr. Haseebullah sir, who encouraged me a lot. And today I'm a doctor here is because of Haseebullah sir. I went through. Thank you. I went through a lot of bad times, but Dr. Haseebullah sir always encouraged me a lot, and today I'm in Hyderabad is because of Haseebullah sir, and I'm a working doctor. I'm always grateful for sir. Thank you sir. Thanks a lot. जनाब हसीबुल्लाह साहब को मैं समझता हूँ कि 13-14 साल से जानता हूँ, जब से मेरा सऊदी अरब आना जाना शुरू हुआ 2009 या 10 से. और मैंने एक उनमें जज्बा पाया, और वो जज्बा ये था कि मैं देखता था कि हमेशा एक फिक्र के साथ, एक पर्पस के साथ, एक कॉज के साथ वो हमेशा आगे बढ़ते थे. और जब मैंने बाबर से मिला तो मुझे ये लगा कि वो वॉक द टॉक करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते हैं या सोचते हैं, मगर वही चीज़ जो वो सोचते थे, मैंने वो सोच उनके बच्चों में भी पाई. ये मैं समझता हूँ कि बहुत कम होता है ये. और मेरे लिए हसीब भाई को जानना और उनसे कुर्बत और उनके साथ बहुत अच्छा इंट्रैक्शन रहा मेरा, तो उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. बिकॉज वी आर ऑल स्टूडेंट्स इन लाइफ. तो वालिद ये भी कहा करते थे कि कभी कभी ये होता है कि किसी लाइब्रेरी में 10 घंटे गुजारने से अच्छा किसी साहिब इल्म के साथ 10 मिनट गुजारना भी बेहतर होता है. तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, और आप लोगों ने भी समझिए अपने वालिद से जो सीखा है और जो उनको करते हुए देखा है, वो आज कंपाइल करके इस बुक की शक्ल में आप सबके सामने लाए हैं. मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है. शुक्रिया. खुदा हाफ़िज़.
ڈاکٹر حسیب اللہ صاحب اور ان کے فرزندان اور دختر اور ان کی اہلیہ کو بھی میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں کافی میرے خیال سے ایک 20-25 سال سے جو ہے میں جانتا ہوں. ایک خاص بات ان کی یہ ہے کہ ہر آدمی ڈاکٹر صاحب کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ان کا جو ہے بہت کلوز ہوں. یہ بڑی خاص بات ہے. بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ میرے کو ملاقات کے لیے. خدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ثواب جاریہ. بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے تو اس کو نجات دلاؤ، کوئی مسافر اگر ہے تو اس کی مدد کرو، اور علم کو دوسروں تک پہنچاؤ. جو بھی علم، چاہے وہ کون سی بھی فیلڈ کا ہو، یا دینی علم ہو یا عصری علم ہو، اگر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے اس کا فائدہ اس شخص اور اس کے خاندان اور اس کے احباب کو ہوگا، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. آرٹ آف وار ایک بک ہے جو 2000 سال پہلے لکھی گئی. چائنیز فلاسفر جس کا نام ہے سانزو، وہ دنیا کے 100 زبانوں میں ہے کتاب، آج بھی موجود ہے. نیٹ پہ جائیے، فری میں. آرٹ آف وار کتاب دنیا کے ڈیفنس آرگنائزیشن میں انکلوڈنگ انڈین آرمی میں ایز اے ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھائی جاتی ہے. 2000 سال پہلے لکھی گئی. یہ کتاب لکھنے کی اہمیت ہے. جو بندہ 2000 سال پہلے ہے وہ کون ہے، کیا ہے، نہیں معلوم ہے، مگر اس کی کتاب دنیا کی 100 زبانوں میں لکھی گئی ہے. کتاب دا بک از اے برانڈ، بک از اے اینٹیٹی. آپ کی شخصیت ختم ہو جائیں گی مگر کتاب باقی رہے گی. آپ کی پہچان ختم ہو جائیں گی، آپ کی کتاب باقی رہے گی. آپ کے دوست احباب وغیرہ بھول جائیں گے مگر آپ کی کتاب باقی رہے گی. یہ کتاب لکھنے کی اہمیت ہے. Before I call Dr. Haseebullah Mohammed Saab on the dais, on the podium to speak to you, I would request his Janasheen, Muhammad Babar Zaman Saab, to please come. Dr. Babar Zaman Mohammed Saab, to please come say a few words. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A little bit excited and also nervous because ابو بازو بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو automatically آواز تھوڑی سی اندر ہی چل جاتی ہے. Having said that, میں زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں because I'm sure you have heard a lot about ابو. تو میں ایک الگ پرسپیکٹیو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب میں جو ورڈز ہیں these are said words، مطلب ایسے ورڈز ہیں جو ابو نے چھاپے ہیں، ابو نے کہا ہے، ہم نے اس کو ریکارڈ کیا ہے and it's there in front of you. With a few things which Abu has said which has never been recorded and it is recorded in our hearts. And that defines what kind of a person Abu is. مجھے یاد ہے ریسنٹلی like few years back ابو مما کافی لمبے ٹائم کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے امریکہ جا رہے تھے میری بہن کے پاس، اور ہم سے ملے کرے. اور جب نیکسٹ مارننگ ہم لوگ جب اٹھے، ابو مما تو پہنچ گئے تھے یا سفر میں ہی تھے، تو there was an email in our email box. اور ہم لوگ جو ای میل کھولے تو اس کے اوپر سبجیکٹ لکھا ہوا تھا will، WILL، وصیت. اور یقین مانیے ایک دم دل دھک ہو گیا کہ لائک ایک دم وصیت کی بات کیوں بولے ابو. اور میں ہم لوگ وہ میل کھولا میں، اور یقین مانیے will ہوتی ہے پراپرٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں، جائیداد کے بارے میں بتاتے ہیں، پیسوں کے بارے میں بتاتے ہیں. اٹ واز اے 2-page ورڈ ڈاکیومنٹ، اور وہ 2-page ورڈ ڈاکیومنٹ میں یقین مانیے آلموسٹ 1.5 پیج کہیں بھی پراپرٹی کا ذکر نہیں تھا. وہ 1.5 پیج میں ابو نے ایسا کیا لکھا کہ ہم لوگ آج تک اٹ ہیز ڈیفائنڈ آور لائفس ایٹ لیسٹ فار لاسٹ سنس دیٹ ول ہیز کم. ابو بولے بیٹے میں یہ جو ول لکھ رہا ہوں میں ول میں تو جائیداد اس کے بارے میں تو آپ لوگ سمجھدار ہیں، میں نے تعلیم دی ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کے اندر اتنا شعور ہے کہ آپ لوگ آنے والے وقت میں شریعہ کے حساب سے آپ لوگ آپس میں بھائی بہنوں میں اتنی محبت ہے، آپ لوگ صحیح کریں گے. بٹ میں جو آپ لوگ کے بیچ میں چھوڑ کے جانے چاہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے 2 چیزیں چھوڑ کے جانے چاہ رہا ہوں، اور جو 2 چیزیں ہیں وہ ہے ایک انکساری اور ایک ہے حسن سلوک. He talked about humility and he talked about treatment towards people, and that is what has defined us, our family, that treatment towards people is of prior importance. Now when I say treatment of people, میں ابو سے اکثر پوچھتا رہتا ہوں، میں ابو جی the world is becoming mean، دنیا بہت خراب ہو رہی ہے، how do we deal, how do communities fight. ابو کا ہمیشہ سے فیمس ڈائلاگ ہے، اور میں نے چھوٹے بھائی کو فورس کر کے وہ کتاب میں وہ کوٹ ڈالا بھی ہے. ابو کا فیمس کوٹ یہ ہے کہ ابو says the world survives because of few good people, be that good person. تو ضروری ہے، چھوٹی بات ہے، مختصر بات ہے، بٹ ابو نے ہمیشہ اچھے بننے پہ، حسن سلوک کے اوپر بہت فوکس کیا ہے. اور انشاءاللہ آنے والی کتاب بھی ابو اسماء الحسنی کے اوپر اس سے ریلیٹڈ بولنے والے ہیں. ابو ٹو بی آنسٹ ود یو، آئی ہیو بین یور بگیسٹ فین، اینڈ میں ہم لوگ چاروں بھائی بہن پورے ہمارے جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہم نے کمائے ہیں اس کو ایکول بھی کہ تو آپ کو ایکول نہیں ہوتے، ہم لوگ نہ ڈگریز بھی ایکول ہوتے ہیں، بٹ الحمدللہ. اور آج بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے، بولتے ہیں کہ آپ جب والد صاحب جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں فلاں کے والد صاحب ہیں. ہمیں ابھی بھی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو حسیب اللہ صاحب کے بچے ہیں بولنے کے لیے. تو الحمدللہ اباؤٹ دیٹ. اور last thing and not last is that it's well known that behind every successful man there is a woman. So I want you all to give a bigger round of applause to my mother, Mama.
for giving him that space to do all these things, because हमें याद है being an NRI सऊदी में बहुत टफ लाइफ होती है. I just still wonder जब मैं डेट्स देख रहा था आर्टिकल्स के कि अबू को कब वक्त मिलता था इस सब लिखने के लिए, और ऐसे नहीं वो शानदार लिखते थे. And why is this book so important? मैं अबू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लाइफ टेस्टिमनी दे रहा हूँ. पिछले 30 साल एटलीस्ट मैंने जब से होश संभाला है, तो शुरू के तो 8-10 साल ऐसे ही चले गए, लेकिन मेरे 30 साल की जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं देखा कि अबू बगैर पढ़े सोते हैं. कहीं भी रहो, हम ट्रैवल करते हैं, हम कहीं भी रहते हैं, कुछ भी हो जाओ, चाहे खुशी का वक्त हो या गम का वक्त हो, अबू सोने से पहले बराबर रीड करते हैं, और हमें भी उसी बात पे इंसिस्ट करते हैं कि कीप रीडिंग. तो जो उन्होंने कई किताबें कई बार पढ़ा है, तो इतना जो रीड क्या है उस रीडिंग का उन्होंने थोड़ा सा जूस डाला है. एंड आई इंसिस्ट कि आप आई एम श्योर कि हम लोग सारी किताब नहीं पढ़ पाएंगे, बट इसके अंदर जो फॉरवर्ड लिखा गया है, आई थिंक रेहान हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. प्लीज वो फॉरवर्ड पढ़ें तो आपको एक जूस समझ में आएगा किताब के पीछे क्या है. एट दिस जंक्शन आई डोंट नीड टू थैंक माय ब्रदर्स और माय सिस्टर और माय फैमिली members, but there's one special person I really want to thank, because of whom this would not have been possible, is my sister-in-law Samra, because you have done a fantastic job and we are very grateful. Thank you. Jazakallah. Our sister Tamanna has joined over the phone. Just let you know that Dr. Tamanna Kafish is in Dallas, Texas. She's not in India. So she's joined us in the last moment, and alhamdulillah, I'm happy that Rehan was able to arrange for it. You know, मैं अबू के लिए एक पोयम पढ़ना चाह रही थी अबू की बुक में से, जो मैं अबू के लिए, जैसे अबू ने बोला था couple of years ago, मैंने अबू के सारे पोएम्स कंपाइल किए थे, और वो टाइम पे मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी और उतना मैं समझती नहीं थी कि वर्ड्स का मतलब क्या है. बस ये अबू के वर्ड्स है और मुझे बस मोहब्बत थी. So I found those poems together and compiled them together. But these last few days when I've been reading अबू की बुक, मुझे और ये एहसास हो रहा है कि बेसिकली अबू हमारी जिंदगी भर की जो टीचिंग में अबू से मिली है, it itself is such a beautiful poem in our life. And I'm just going to start with the first poem that's here in the book. It's called A Drop, which he wrote in 1974, which is, subhanallah, almost 48 years ago. So here it goes. A drop, a dewdrop on the petal, a rose petal, like a pearl, the drop. And the rose, beautiful and fragrant, exciting, enchanting, full of charm. But my eyes shift to the stalk. Thorns? The beautiful rose. And the tortuous thorns? Love and hate, right and wise, fantasy and realism. And then the wind, the petal, the dewdrop rolls on the petal, leaves a trail, a temporary trail, but itself becomes an undistinguishable part of Mother Earth. Is this life? So, just in this poem, you know, Abu is talking about we always tend to be superficial and look at the beauty of the world. But beneath that is a lot of difficulties, sometimes ugliness. And these difficulties and ugliness let you down in your life. But Abu ने हमें हमेशा ये सबक दिया है कि यही मुश्किलात होते हैं और यही तकलीफ होते हैं अपनी जिंदगी में जो आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनाता है. And just as the drop, we keep charging ahead to leave a trail in this world. In all essence, these have been the teachings of my father to me, to all of us. Abu Jan, you've seen it through my journey. You've been the biggest and integral part of where I am and what I am today. I love you, Abu, for all that you do for us and all that you've been doing. I cannot imagine a single moment without you. I love you, Abu Jan. Thank you so much. हज़रात, आप लोगों में से कई लोग किसी न किसी अंजुमन से वाबस्ता हों. ऐसे इज्तिमात करें अगर आप, तो उसमें हम सबको अगर बुलाएं तो उसका नतीजा ये होगा कि इसी किस्म के मौके हमको मिलेंगे, जिससे जाहिर है कि मेल मिलाप न सिर्फ मेल मिलाप बढ़ेगा, बल्कि इसके इस्तेफादे के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि अगर एक जगह और बैठे. चुनाचे कुछ गैर मुस्लिम कमेंट्स करने वालों ने ये भी कहा कि मुसलमानों को जो 5 वक्त की नमाज का पाबंद किया गया है, उसकी वजह ये भी है कि वो 24 घंटे में 5 वक्त एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, मिलते हैं, और जाहिर है कि उसकी वजह से उसके किस कदर मफादात हैं, फ़ायदे हैं. बहरहाल मैं आज के इस इज्तिमा के बारे में
सिर्फ इतना ही कहूँगा कि डॉक्टर हसीबुल्लाह ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली एक मेंबर के बारे में कहना भी मुश्किल है कि किस कदर उन्होंने अपने आप को वक्फ किया है और किस तरह से वो इतने बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। ये एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत है हसीबुल्लाह, और उनकी वजह से उनके ट्रेनिंग और उनकी तरबियत जो है उससे ज़ाहिर होती है कि वो किस किस्म के माहौल से अपने अरकान ख़ानदान को इस्तेफ़ादा पहुँचा रहे हैं, और न सिर्फ ये बल्कि हमारे अवाम के लिए और किस मुस्तफ़ीद मुफीद। बहरहाल मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि हमें ऐसे महफिल में शिरकत का मौका मिला। खुदा हाफ़िज़। आज से तकरीबन 18 साल पहले मैं जब 50 साल का हुआ तो मेरी बेटी डॉक्टर तमन्ना काबिज जबीन उसने मुझे ये किताब प्रेजेंट की थी। मुझे कुछ पोएम्स कहाँ से ढूंढ कर निकाल के, पुराने पोएम्स से निकाल कर ये द बर्ड नाम देकर वो फूल आज तक है जो 18 साल पुराना। तो उसके बाद फिर बाबर जमान साहब जब पुराने आर्टिकल्स अरब न्यूज़ और सऊदी गज़ट के मीड मैगजीन के पेपर्स पीले होने लगे तो बोले अब्बू इसको तो किताबचा बनाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई देखो। तो वो कुछ काम शुरू किए। उसके बाद बाबर बीच में जो है सो करते करते फिर जाना भी पड़ा उनको। लेकिन फिर सबसे छोटे बेटे जो मेरे हैं नादिर रेहान और आमिर जिब्रान जो यहाँ पर मास्टर ऑफ सेरेमनीज का काम कर रहे हैं, ये लोग अपने दिमाग लड़ाए और ये जो किताब है बेसिकली ये नादिर रेहान और उनकी मिसेस समरा खान ये लोग राइट रीराइट प्रूफ रीडिंग उसका कवर डिजाइन ये किए हैं। तो ये चारों बच्चों का, और ये मेरी खुशकिस्मती है शाहिदा जबीन जो मेरी मिसेस है वो भी जो है हर चीज में साथ देते रहे। Primarily, this book has been written over a period of long time. As Gibran had said, I wrote an article about computers, man becoming slave to computers almost 35-40 years back. और आज वही हाल है. So point is, what I had thought about 35 years back, so some of those articles are here. I would like to share, because not taking much time, I would like to share a very small article which is in this book called the ATM ऑफ इमोशंस। हुआ यूं था कि मैं न्यूयॉर्क में था टीचिंग असाइनमेंट में के लिए, तो मुझे एक एटीएम मशीन को जाना पड़ा, एटीएम ऑफ रिलेशनशिप। तो मुझे एक एटीएम मशीन को जाना था, गया मैं, तो मेरे सामने एक अमेरिकन कुछ कार्ड लगाकर पैसे विड्रॉ कर रहा था। इट सो हैपन कि वो मशीन जो थी एटीएम की वो ऑडियो विजुअल मशीन थी, मतलब वो आपको स्क्रीन पे बताती थी और बोलती भी थी। तो मैं पीछे खड़ा था उसके, वो कार्ड लगाया, कुछ फिगर डाला, तो मशीन ने कहा कि सॉरी नॉट इनफ बैलेंस। वो 2-3 मरतबा ट्राई किया, बारहा मशीन ये कहती रही नॉट इनफ बैलेंस। अमेरिकन ही था, मशीन को लात मारा और चला गया। जब मैं होटल की तरफ जा रहा था मेरे दिमाग में ये बात बारहा गुजर रही थी कि नॉट इनफ बैलेंस एन एटीएम। तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको एक एटीएम कार्ड दिया हुआ है। वो एटीएम कार्ड है रिलेशनशिप्स का, वो एटीएम कार्ड है हमारी मोहब्बत शफकत का, वो एटीएम कार्ड है एक दूसरे से सिला रहमी का, एक दूसरे से मोहब्बत से रहने का। मसला क्या आ गया है? मसला ये आया है कि एक भाई दूसरे भाई से नाराज है, चाचा भतीजे से नाराज है, सिला रहमी का जिक्र कहीं नहीं है। अब देखिए समाज में क्या है, हम अपने खानदानों में देखिए कि हमारे रिलेशनशिप्स, हाउ फार आर वी एम्पैथेटिक towards our own people? How far are we sympathetic towards our own relatives? How far are we affectionate and love? If we do not deposit that love and affection, अगर आपने अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में वो डिपॉजिट नहीं किया, वो शफकत, वो मोहब्बत नहीं बताई, तो क्यों उम्मीद करते हैं कि कोई और आपके सामने करेगा? ये जो एटीएम है आपका, ये मोहब्बत और शफकत का एटीएम अल्लाह तबारक ताला ने हमको दिया हुआ है। द बेस्ट पार्ट इज ये एटीएम कार्ड आपका कभी रायगा नहीं जाएगा। अगर ये आप एटीएम कार्ड ऑफ रिलेशनशिप, आप शफकत, मोहब्बत का, खुलूस का, सिला रहमी का अगर ये कार्ड आपका मजबूत रहा तो यकीन जानिए आप दुनिया में, जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं हो इंशाअल्लाह। तो ये एक उसमें छोटा सा एक आर्टिकल। तो ये जो व्हाट्स ऑन माई माइंड जो है, एक्चुअली आप जब भी फेसबुक खोलते हैं तो पहला सवाल ये आता है। तो उस दिन भी जब मैं बैंक से लौटा
और मैं बैठा फेसबुक खोला तो वो पूछा व्हाट्स ऑन योर माइंड, तो मेरे जहन में दो बातें वही चल रही थी, एक तो एटीएम कार्ड एंड नॉट इनफ बैलेंस. सो लेट अस ऑल डिपॉजिट इनफ बैलेंस ऑफ love, affection, empathy, sympathy towards each other, whether they are relatives, they are friends, or they are just human beings. ये हमको करना बहुत ज़रूरी है. I think as Babar said, this book में forward जो है इसका नादिर रेहान मेरे सबसे छोटे बेटे बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ लिखे हैं. अगर आप पूरी किताब ना भी पढ़ें तो थोड़ा सा forward पढ़ लीजिए, क्योंकि नादिर और समरा खान मिलकर बहुत मेहनत की है इसके ऊपर. I once again would like to thank all my sons, बाबर जमान, आमिर जिब्रान, डॉक्टर तमन्ना काविज जबीन, मैंने जैसा बताया जिसने इससे शुरुआत की थी, और ऑफ कोर्स इट एंडेड. तो बहुत अच्छी बात हुई है, बड़े से शुरू हुआ और आखिरी बेटा जो है उसको ख़त्म किया. और जैसे लोगों ने कहा कि खुशकिस्मत बच्चे हैं, मैं अपने आप को खुशकिस्मत बाप समझता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि ये औलाद they have been very kind to me and this is the effort. आप यकीन जानिए ये किताब प्रिंट होके आने के बाद मुझे पता चला कि ये किताब प्रिंट हुई. इसकी तस्वीरें कहाँ से ढूंढ के कौन कौन से एल्बमों से निकाल कर प्रिंट किए, आई डोंट इवन हैव एन आइडिया. गुलाम इज़ानी साहब एंड अज़मतुल्लाह साहब आर माई बेस्ट इंस्पिरेशन. आई थैंक जनाब, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इज़ानी साहब का तशरीफ लाए, और मिनाजुल हसन साहब भी यहाँ मौजूद हैं. तो बहुत सारे हैं, अब फर्दर नाम नहीं ले सकता. जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर दिस माई सन्स.